Okay. Hello everyone, this is Dr. Hira Asar from Sehat Kahani. I am a general physician. Sehat Kahani is telemedicine platform. It's an affordable way to take help from doctor at the comfort of your own home. Sehat Kahani will be conducting live sessions in the month of Ramadan, which will help you stay healthy. Today we are here to discuss about the benefits of Ramadan. So first of all, I would like to introduce Dr. Kehkashan, who is the guest for this session with us. Hello, how are you? Assalamu alaikum. I'm good, thank you. Namaskar. Ramadan Mubarak. आपको भी रमजान मुबारक. Ji, my name is Dr. Kehkashan, and I'm a Sehat Kahani doctor on Retail app. I have 5 years clinical experience, and I'm a general physician. That is great. Thank you so much, Dr. Kehkashan, for joining us today. So moving towards our session, which is Can Ramadan Boost Your Well-Being? I would like you to start with the definition of fasting. Yes, Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak to everybody. And as we know that, first of all, Ramadan is a holy month, and clearly it's called as a month of purification. So as the definition itself says, Ramadan is a month of purification. So the fasts that we do in Ramadan not just purifies you spiritually, but also physically, mentally, and also socially. So how do you actually define fasting? And especially the fasting of Ramadan is basically fasting is cycles between long periods of not eating and a short period of eating. So this, in terms of if we say as a scientific definition, तो ये तो वो definition हो गई कि जो basic definition है रमदान के रोज़ों की, कि हम एक बहुत लंबा अरसा जो है वो नहीं खाते हैं और फिर उसके बाद एक छोटा सा टाइम फ्रेम होता है विंडो जिसमें हम खाते हैं. तो this is the religious or the definition. But if we go back into the medical science definition, and I'm sure all of us are aware that there's a very common thing going on these days known as intermittent fasting. So it's amazing that how our religion has already given us the concept of intermittent fasting so many years ago. So basically, Ramadan ke roze fits perfectly into the definition of intermittent fasting. So intermittent fasting is basically you fast for almost 16 hours, and then you have the eating window of 8 hours. So 16 to 8 method of intermittent fasting is actually what Ramadan has given us as a gift. Okay, thank you. So, is it mandatory for each of us equally? I'm actually concerned about the women who are pregnant or have diabetes or other illnesses. Yeah. So a very good question. So actually, let's just, before going to that, let's just start off that actually what benefit does this Ramadan's fast give us? So एक part है spirituality, वो है. Apart from that, it also gives us physical benefits, it gives us mental benefits, it gives us social benefits. Now, how does it gives us the physical benefits? So the first and the foremost thing is that we're not eating. So the main thing is जो हम 365 days a year जो है वो हम करते हैं, and we're actually burdening our stomach. हम खा रहे होते हैं, हम बस खाते रहते हैं, and our stomach does not get any rest. So basically, if you see, more than 50% or 60-70% of our diseases actually occurs from our GI tract. So first of all, the first and the foremost thing is that our GI is getting rest. हमारे stomach को time मिलता है, थोड़ा, it gets rests. The acids that are coming up all the time
that comes down. हमारे GI में जो absorption हो रही होती है, होता क्या है कि जब हम खाते रहते हैं and we don't give some time, तो आपका स्टमक भरता रहता है और वो एब्जॉर्ब जो करता है उसमें से चीज़ें वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, जो टॉक्सिन्स हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. बट इफ यू डोंट गिव इट अ रेस्ट, जो जो लेफ्ट ओवर टॉक्सिन्स हैं दे डोंट गेट टाइम टू क्लेंस आउट. So this is the first thing that Ramadan does. It gives our stomach enough time to rest, to clean out those toxins. So it not just cleanses your toxins, and it doesn't just prevent your GI diseases. ये आपके दिल के अमराज में भी बहुत मदद करता है. आपकी हार्ट आर्टरीज जो हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हैं, जो स्ट्रेस है उनके ऊपर, उसको डिक्रीज करता है. आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में बहुत हेल्प करता है. Diabetes, it is the most effective regime for the diabetic people. But when I say that, I also need to emphasize that जो type 1 diabetes के patients हैं, जो insulin dependent हैं, they should actually fast with caution, because ड्यूरिंग डायबिटीज हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज बनते हैं, जो आपके जब आप स्टार्व करते हैं, आप अपने मसल्स को खाना नहीं देते हैं, तो दे रिलीज कीटोन बॉडीज विच एक्ट एज अ एनर्जी स्टोरेज. ठीक है, तो जो टाइप 1 डायबिटीज या इंसुलिन डिपेंडेंट पीपल हैं, उनके लिए कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज करना बहुत मुश्किल है. सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट टाइप 1 people with type 1 diabetes should always consult doctor, especially their diabetologist, before they proceed with the Ramadan fasting, or in fact any kind of fasting. So intermittent fasting is basically it's not a very ideal thing for type 1 diabetes people. But whereas when we talk about insulin resistant, type 2 diabetes, it is very effective for type 2 diabetes, because mostly in type 2 diabetes हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है, बिकॉज हमारे for so many reasons, but one of the main reasons is कि हमारी बॉडी में बहुत सारा फैट है. ठीक है, जो आपके इंसुलिन को एक्ट नहीं करने देता मसल्स में जाके. So so fasting actually helps you reduce the fat, because आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करता है वो. जब आप खाना कम खा रहे हैं, you just have 2 meals a day instead of 3 meals. So you're definitely creating a calorie deficit. And then जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं और आप इनटेक आपका कम होता है और आपका आउटपुट ज़्यादा है, you're doing your regular daily chores, you're doing your daily work, सब कुछ वैसे ही है, बस आपने मील्स निकाल दिए हैं अपने दिन अपनी लाइफ से. तो सेकेंडली मैंने ये सुना था कि आप जो इवनिंग डोज है उसको आप मॉर्निंग में शिफ्ट कर दें, और मॉर्निंग डोज को इवनिंग में शिफ्ट कर देते हैं पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं उनकी, तो उससे उनको बहुत बेनिफिट मिलता है. Yes, exactly. So with type 2 diabetes also, it is highly recommended that even people with type 2 diabetes, they see their doctors before they proceed with the fasting, because अगर तो आप इंसुलिन पे हैं and you're not on the correct doses of insulin, you can go into hypoglycemia. ठीक है, तो and that's definitely what we don't want. तो आपकी sugar monitoring, regular sugar monitoring, and आपका dosage should be monitored. So for that reason, type 2 diabetes also के patients को भी, they should definitely consult their doctors before proceeding with the fasting. अच्छा, now when we say psychological cleansing, psychological benefits of Ramadan and its fast, so what does fast do? हमें आदत होती है खाना खाने की हर वक्त, बैठे हुए हैं खा रहे हैं, बोर हो रहे हैं खा रहे हैं, कुछ नहीं है चाय पीना है. So we're used to listening to our impulses. Ramadan and its fast puts a block to it. Now you have an impulse कि मैं पानी जाऊं और मैं पानी पी लूं, but you can't. You're holding back yourself. So
restraining yourself from doing what you want to do is the biggest psychological benefit that Ramadan actually gives us. And when you do it 30 days a month, it actually trains your brain to be rigid and to listen, to control yourself from listening to your impulses. So अगर हम फास्टिंग करते हैं या हम अपने आप को कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि अच्छा हमने ये करना है, so basically the second thing the second thing is that it disciplines you. ठीक है, you have to wake up in the morning. आपको पता है आपने सुबह उठना है, आपको पता है आपने सहरी करनी है. अगर आपने सहरी नहीं की तो आपने पूरे दिन फिर आपने you'll starve. So you'll get up in the morning, you'll eat, and then again you would know कि मुझे मैं ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खा सकती, या मैं I cannot just be on sugars सहरी के टाइम पे. तो that पूरा दिन निकालना है तो you have to eat a balanced diet. You have to eat something that is going to keep you hydrated, that is going to keep you a little full. So you yourself plan such a food, not by force but by will, because आपने रखना है and you have to do it. So मतलब आपकी it, विल it, it पावर स्ट्रॉन्ग कर रहा है. exactly it disciplines you. So this is it's an amazing thing, because there is no therapy, there's nobody can help you if you don't help yourself. तो Exactly. अगर हमने किसी चीज़ से अपने आप को, खुदा ना खास्ता अगर हमारी कोई एडिक्शंस है, ठीक है, we can take benefit of Ramadan to get rid of those addictions, because you stop smoking at least सुबह से लेके मगरिब के टाइम तक. उसके बाद ठीक है आप इफ्तार के बाद फिर लोग जाके स्मोक करते हैं, but if you want to, if you're really serious, you can actually get rid of smoking. For people who are Exactly. alcoholics, अपने they ब्रेन can को they एक can तरह से रीसेट कर सकते हैं अपना पूरा exactly. डिसिप्लिन सेट करके. Exactly. So Ramadan is a best time. It's a best opportunity given by Allah for us to reset पूरे साल में जो हमने बिगाड़ पैदा की हैं अपनी अपनी बॉडीज में, हम उसको रीसेट कर सकते हैं. हम अपने अपने बॉडी को क्लेंस कर सकते हैं, हम अपने माइंड को क्लेंस कर सकते हैं, और हम सोशली जो है वो क्लेंस कर सकते हैं. एंड व्हेन आई से सोशली क्लेंजिंग, सो Ramadan itself has an aura. Okay, तो जब जब रमदान आता है तो I'm sure each and every one of us can feel that aura of Ramadan, that aura of generosity, that aura of peace. Gratefulness. Exactly, of peace. So it just gets inside you, and I'm sure that each and every one of us wants to give, wants to share, you know. So it creates a bond. It's actually a very good time for us human beings, or especially if we talk about Muslims. So it's a very good time for us to bond with our family, our neighbors, our surroundings. When I say bond with family, हम लोग के पास टाइम नहीं है. हम बहुत सारे लोग, हम लोग सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं. When we come back we're like, oh, we're stressed, ये बात नहीं करो, हमें जब सोना है. But when it's Ramadan, so it's just 2 times. ठीक है, everybody gathers on the table for sahur, for sure. Everybody gathers on the table for iftar. So That's true. at least minimum 2 times you're getting a chance to sit down with your family. You're so mashallah, I mean, what more of a blessing can anybody ask from Ramadan? And as far as, yeah, just coming back to your question, okay, so when we say that Ramadan and its fast is a gift from Allah, so okay, being Muslims, we have faith कि अल्लाह के किसी काम में खराबी नहीं हो सकती, सिर्फ खैर ही हो सकती है. So for sure, it has no effects for lactating mothers. Okay, there are research that has been done, and that has proven that if lactating mothers fast, there is no reduction of milk um, during the fast. They just need to they need to modify their diet according to it, and they're good to go. So
as far as researchers are concerned, there is Ramadan fasting doesn't have any negative effects actually. On ठीक है lactating आपके mothers. Okay. not And what just for about lactating pregnant women? mothers, but also Okay. for other patients. Like, in fact, it has a positive effect on other diseases. Okay. So there have been so many researches. I mean, intermittent fasting is a go to आज के era में. ठीक है. There's fasting का concept जो है वो हर religion में है. ठीक है, not just Islam. It's also in Hinduism. It's also there in Buddhism. It's also there in Christianity. It's there everywhere because it has a benefit. And for Exactly. those people who are not on any religion, they actually understand the benefit of intermittent fasting. So even if they're not following a religion, they're following the concept of intermittent fasting. And basically, Exactly. if you go and search, so intermittent fasting is basically also not just fasting; it's a dry fast. ठीक है. तो there's a concept of dry fast and wet fast. So wet fast is जब आप fast तो करते हैं, but आप पानी पी सकते हैं या आप कोई drinks ले सकते हैं. But dry fast जब हम बोलते हैं तो you're not eating as well as you're not drinking anything. So it's like a complete stoppage of anything going inside your body. So what does it do? It actually, there have been so many researches that have shown that so many diseases like psoriasis, जबकि dermatological हमारी condition है psoriasis, लोगों को हो जाते हैं. जो psoriasis के जो index है, that has pretty that went down after 30 days of fasting. ठीक है. Cancer के जो patients हैं, they, if they didn't degress, ठीक है, but their progression also stopped. Okay. so Exactly. so researchers, when they talk about fasting, they tell कि अगर किसी का lifespan बढ़ाना है, you know you put those rats, actually वो तो experiment rats पे करते हैं, so you put those rats in calorie deficit. So if you decrease the calorie or the energy levels inside a body, the body actually उसका अपना mechanism activate होता है. This is one of the reasons that it's strongly suggested that the very important thing that the fasting does is improves your immunity. So it improves your immunity by increasing cytokines. So cytokines क्या है? साइटोकाइंस हमारे खून में ऐसे एंजाइम्स हैं या ऐसे प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, सूजन कॉज करते हैं. एंड इन्फ्लेमेशन दैट देन तो जब आपकी, इसीलिए रिमेटाइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट है जिनको आर्थराइटिस है, सो बेसिकली आर्थराइटिस इज या एसएलई है, सो ऑल दीज कंडीशंस जिसमें इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व है, वो वाली इन्फ्लेमेशन जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से नहीं है या जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, you can easily benefit from Control. fasting because उसमें साइटोकाइंस लेवल्स आपके कम हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस कम हो रही है. तो फॉर दोज 30 days, जब आप 30 days के बाद आप when you see yourself and review yourself, so your inflammation process has gone to a very less extent. Other thing that fasting does is it increases your macrophages आपकी body में, आपके bloods में. What is macrophages? So macrophages are like white blood, big huge white blood cells जो आपके body में bacterias, viruses या जितने भी और other इस तरह के organelles होते हैं उनको they eat it up. So it actually prevents you from developing further disease, and also it helps you in healing. So somehow fasting increases macrophages in your body. तो होता क्या है कि हमारा हमारा जो सेल स्ट्रक्चर है, जैसे हम बने हुए हैं सारे, it has metabolism going on inside it. ठीक है. Again, when I said कि हम जब खा रहे होते हैं, we're just putting in the toxins inside. हम अपनी body को time नहीं देते to rest, to reset, to do its functioning properly. For instance, आप एक example ले लें कि अगर हम कोई machine इस्तेमाल करते हैं घर में, अगर आप blender use कर रहे हैं, ठीक है, आप उस blender को चलाए चले जाएं,
एक टाइम आता है कि it heats up and it stops, you know. Exactly. So it's always mentioned in the booklets, या जब आप खरीदने जाती हैं तो आपको बोला जाता है कि आपने सिर्फ 2 सेकंड चलाना है, 3 सेकंड चलाना है, फिर स्टॉप करना है, फिर उसके बाद चलाना है, फिर स्टॉप करना है. What is Exactly. it? This is our body. तो हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास we didn't come with a manual as such, तो हमें नहीं पता, but this is what our body needs as well. So उसकी वजह से हमारे macrophages, हमारी immunity decrease हो जाती है. So when it fasts, it's हमारे. अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है? Third thing, um, microbiomes. Okay, so microbiomes क्या है? वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है. माइक्रोबायोम्स क्या है? तो माइक्रोबायोम्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे बॉडी में रहते हैं, जो हमारे जीआई ट्रैक्ट में रहते हैं. They increases, they flourish. Okay, somehow when you do not give them food, okay, they actually live longer. So when they live longer, they actually support your GI tract. Now That's good. exactly, and if you also see कि हमें हमारी सोसाइटी में, हमारे हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की है? अल्सर्स, GERD. It's so common. It's so common. उसकी रीज़न क्या है? हाई गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन. ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है पेट को? बिकॉज उसके अंदर खाना जा रहा है, एंड इट नीड्स टू डाइजेस्ट इट. It's designed that way कि उसके अंदर खाना जाएगा तो उसने लाजमी उसको डाइजेस्ट करना है, तो उसने एसिड रिलीज करनी है. अब वो जब एसिड रिलीज करेगा, some people, they generate ulcers inside their stomach, or they generate ulcers inside their duodenum. तो वहाँ पे जब जो है वो गैसेस बढ़ती हैं तो तकलीफ होती है, you know. And then we're on so many medications. हम ये ले रहे हैं, हम omeprazole खा रहे हैं, हम ezium खा रहे हैं, हम सुबह सुबह दोपहर शाम कर रहे हैं. The very simple thing is fast, you know, fast. And when and organize your meals while fasting in a way कि जो आपकी stomach friendly हो. यानी आप less spices खाएं, आप कम तेल का इस्तेमाल करें, और नहीं, बिल्कुल नहीं करें तो बहुत ही अच्छा है. बट अगर चले हमने पकोड़े खाने ही हैं तो थोड़े से खा लें, एक खा लें तो मतलब उससे ज़्यादा नहीं. So just give avail this month, avail this opportunity that Allah has given you to reset and come back in a full health once we're done. कि जब हम 30 दिन के बाद जब हम निकले रमज़ान से बाहर, तो हम अपने आप को एक न्यू मी के तौर पे हम फाइंड करें. बिकॉज सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आजकल सोसाइटी में? वेट रिडक्शन. Exactly. Everybody is Obviously. exactly, Okay. everybody is after weight reduction. भाई वेट लूज करना है. अच्छा भाई, कैसे वेट लूज करें? डाइटिंग करें, क्रैश डाइट करो, नो कार्ब डाइट करो, नो कीटो डाइट करो, कुछ मत करो. Seriously, with the gym exercise. Exactly. So what fasting does is it actually increases your oxidation process. ठीक है, आपकी बॉडी Which में. is good for health. Yes, what is oxidation process? So oxidation process is आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स की शक्ल में. They actually decay your cells or your normal cells. जैसे आप कोई भी फल देख लें घर में, ठीक है, एप्पल देख लें, ठीक है, एप्पल बहुत दिन तक पड़ा रहे तो क्या होता है? उसका कलर चेंज हो जाता है. दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. वो कलर जो चेंज होता है वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन प्रोसेस से चेंज होता है. तो वो, just imagine that apple as your cell, as your body cell. ठीक है, and if you still keep it like that, you do not remove those particles or those free radicals, it will further decay to an extent
कि जहाँ पे वो it's completely decayed and rotten. So the same is unfortunately हम एप्पल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रीसेट नहीं कर सकते. We cannot revert it back, but with our Okay, body so we alcohol is can. a good method to Hmm. detoxify ourselves, our bodies, for Exactly. spiritual cleansing, and to get Exactly. physical benefits and other benefits. So, Hmm. lastly, I would like you to add few healthy choices about eating in Sahri and Iftar to get the Okay. maximum benefits. So for all the ladies out there, and for even for the gents who want to lose weight, sorry, um, you know what to eat. You know the drill. Okay, आपको पता है कि आपने सैलड्स खाने हैं, आपको पता है आपने बहुत सारा पानी पीना है, आपको पता है Mhm. कि आपने फ्राइड आइटम्स नहीं खाने. ठीक है. So Exactly. actually me and you, we cannot plan somebody's food because everybody has their own choices. The only Okay. thing to remember is that this is the opportunity, this is the best opportunity given, जिसमें आपकी body is in a complete reset mode. ठीक है. Mhm. आप healthy खाएं. Dates is dates is Yogurt basically too. it's the Yogurt is best. good too. It's the best fiber, it's the best source of energy, it's the best source of potassium, it's the best source of आप सिर्फ 3 dates खाएं. अगर आप सहरी में सिर्फ 3 dates खाते हैं और you have a cup of milk, you're done. You're so good to go. ठीक है. आपने इतने कम कैलोरीज में अपनी बॉडी को पूरा फुल फ्लेज मील दे दिया. The calories, see, the purpose of fast is calorie deficit, right? हमने अपनी बॉडी में कैलोरी डेफिसिट करना है and we have to give normal output. उसमें पर्पस क्या है कि when you by the end of 30 days you will notice there is going to be a fat reduction. ठीक है. हमारी बॉडी में visceral fat जमा हो जाता है, जो हमारे Mhm. ट्रंक के हमारी जो ट्रंकल ओबेसिटी है, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ आवर विसरल फैट. अब विसरल फैट क्या है कि हमारे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जो है ना वो फैट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, विच इज Mhm. वेरी एक्चुअली वेरी टॉक्सिक एंड Right, वेरी right. वेरी हार्मफुल बिकॉज these fat act releases those toxins जिसकी मैं बात कर रही थी, जो ऑक्सीडेशन करते हैं, and then they put the burden on our liver. ठीक है. तो हमारा सारा so so fasting is a very good opportunity to 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 discipline ourselves कि हम अपना fat Mhm. reduction करें, especially हमारी truncal obesity पे. If we work out a little while we are fasting, I know it's hard. Instead of sleeping the entire time, हमारे यहाँ नॉर्मल नॉर्म क्या है फास्टिंग का, हम रोजे तो रख लेते हैं बट हम पूरे दिन सोते हैं. That's not going to help. you know you have to work, you have एग्जैक्टली to और live पीरियड के स्टार्टिंग में अपनी चॉइसेस भी आपको ठीक रखनी पड़ेगी बिकॉज यूजुअली exactly. जो ये पकौड़े समोसे वगैरह हैं इससे वेट कम होने की बजाय आपका बढ़ जाएगा वेट. एग्जैक्टली. नहीं अमेजिंगली आजकल तो हेल्दी ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं. यू कैन ऑप्ट फॉर बेकिंग देम, यू कैन ऑप्ट फॉर टोस्टिंग देम, यू कैन ऑप्ट फॉर गोइंग फॉर एन एयर फ्रायर. आई नो एग्जैक्टली. हमारी सोसाइटी में एयर फ्रायर आई एम नॉट श्योर कि इतना कॉमन है कि नहीं है, बट इट्स वेरी बेनिफिशियल बिकॉज वो आपको सारी चीज़ें वो आपके टेस्ट बड्स को वो चीज़ दे रहा है जो उसने चाहिए, जो वो क्रेव कर रहा है, बट omitting the oil. you know so not just that, but excess of everything is harmful. अगर आप एग्जैक्टली. कहें कि जी हम जो है ना वो फ्राई नहीं खा रहे, बट हम दही बड़े खा रहे हैं. ठीक है. और आपने दही बड़े जो है वो इतने इतने दही बड़े खा लिया आपने, तो दही बड़ों में भी तो ऑयल है. यू नो ठीक है, वो निकल गया था बट ऑयल है उसमें. ठीक है. उसमें कार्ब्स हैं. the oil is not just not oil is not our enemy. Our enemy is also carbs. Too much of carbs. Refined carbs. आप carbs खाइए, आप complex carbs खाइए, आप oats खाइए, आप जौ की रोटी खाइए, or you make chapatis which has all kind of grains in it. you know थोड़ा बेसन डाल दिया, थोड़ा चोकर डाल दिया, थोड़ा जौ डाला, and mix it up and make a chapati and utilize that. What's complex carbs क्या करता है? It goes and it stays inside your body, and slowly and gradually it
releases the glucose. हम जो नॉर्मल खाना खाते हैं वो क्या करता है, आपकी बॉडी में जाता है and it releases the sugars instantly. That is why कि diabetes के patients के लिए carbohydrates इतने harmful हैं. But if you opt for complex carbohydrates, it's on the other hand, it's beneficial. It increases your metabolism because it's forcing your body to use up those to break down those carbohydrates. और फिर वो पहले break करेगा, फिर उसको finer particles में लेके आएगा, and then it's gonna release the energy to use up. And secondly, साथ में क्या होता है, जब आप complex carbohydrates खा रहे होते हैं, आपकी बॉडी ने एनर्जी तो चाहिए उसको, और उसको कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिल रही है, तो इट ब्रेक्स डाउन द एडिपोज टिश्यू, जो आपके सेल्स हैं, एडिपोज सेल्स, जो आपके फैट सेल्स हैं. फैट सेल्स बेसिकली एनर्जी स्टोरेज, आपकी बॉडी में जब आपने खाना खाया होता है और आपने उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया होता है, तो इट गेट्स स्टोर्ड एज फैट सेल्स. सो उसी तरह जब आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है एंड कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट प्रेजेंट, the adipose fats, जो fat cells हैं, that breaks down to release the energy. So this is how it all works. So once we have it in our brain, the mechanism, the actions, you can very easily make so much use of these 30 days. Discipline yourself, discipline your diet, lose maximum weight you want to. I would suggest monitor your weight every morning. ठीक है, तो आपको पता हो कि अच्छा मैंने इफ्तार में कल ये खाया था तो मेरा इतना वेट बढ़ गया. It'll scare you actually. तो the next day आप खुद ब खुद जो है you will restrain yourself from eating that. Okay, exactly. Thank you so much, Dr. Kehkashan, for making us clear about the benefits of Ramadan. Thank you, everyone. Thank you so much. And once again, I am available on Sehat Kahani retail app. So if you guys want to consult or catch up with us, you can easily find us over there. Thank you so much. Thank you so much, everyone. परेशानी बता के नहीं आती, कहीं भी किसी भी वक्त आ जाती है. किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में आपका साथ देने के लिए है सेहत कहानी, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त, सिर्फ 1 मिनट. तो आज ही सेहत कहानी ऐप डाउनलोड करें और किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहें. सेहत कहानी, सेहत ऑनलाइन, ऑन टाइम.